गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, नमस्कार एवरीवन। मेरा नाम अरविंद है और हम हैदराबाद बॉयज हैं। वी टॉक ऑल थिंग्स क्रिकेट। वी जस्ट रिसेंटली कंक्लूडेड आवर बॉर्डर गवस्कर ट्रॉफी। तो आज हम बात करेंगे इंडिया ऑस्ट्रेलिया का ओडीआई सीरीज जो अभी होने वाला है, 3 मैच ओडीआई सीरीज। और हमारे साथ हैं सौरभ। Hello everyone. Namaskar. Hola. I don't think so. We have Spanish viewers. That's funnily though. But namaste to everyone. So let's get going. या तो आज हम बात करेंगे वनडे सीरीज का, जो आज से शुरू हो रहा है। द फर्स्ट ऑफ द सीरीज, फर्स्ट ऑफ द गेम जो है मुंबई में हो रहा है, वानखेड़े स्टेडियम। आई थिंक ये एक इंटरेस्टिंग सीरीज है क्योंकि पीपल आर ऑलरेडी फोकसिंग ऑन आईपीएल, क्योंकि अब आईपीएल आ रहा है 2 हफ्तों में। तो एक माइंडसेट है आईपीएल का प्रिपरेशन करने के लिए, बट दूसरा माइंडसेट जो मैं सोचता हूँ ये इम्पोर्टेंट है, मोस्टली मोस्टली फॉर ऑस्ट्रेलिया एंड टू सम एक्सटेंट इंडिया के लिए भी, क्योंकि Yeah. इस साल वर्ल्ड कप होने वाला है इंडिया में अक्टूबर में। तो एसेंशियली दिस इज 7 months बिफोर वर्ल्ड कप। प्रॉबली वन लास्ट चांस फॉर ऑस्ट्रेलिया टू फाइन ट्यून देयर होम कंडीशंस के लिए, अडेप्ट होने के लिए, कैसे उनके प्लेयर्स खेल पा रहे हैं। उनको एक टॉप टियर अपोजिशन लाइक इंडिया विद होम क्राउड सपोर्ट के साथ एक अपॉर्चुनिटी मिल रहा है इस साल टू फाइन ट्यून देमसेल्व्स। और उसके बाद क्योंकि ऑस्ट्रेलिया चला जाएगा एशेस पे, और वो आई थिंक उसके बाद आई थिंक एक एक छोटा सीरीज खेलेंगे साउथ अफ्रीका में, वार्म अप साउथ अफ्रीका के साथ इंडिया में। हालांकि दैट्स लाइक ऑलमोस्ट लाइक प्रिपेयरिंग योरसेल्फ फॉर द वर्ल्ड कप। तो आई थिंक ऑस्ट्रेलिया के लिए एक इंटरेस्टिंग सीरीज होने वाला है इन टर्म्स ऑफ कि क्या क्या उनको लगता है कि हु शुड बी द प्लेयर्स दे कुड पिक अप फॉर इंडिया, फॉर द इंडिया वर्ल्ड कप। इंडिया के लिए भी एक्चुअली इंटरेस्टिंग है क्योंकि इट विल हेल्प इंडिया टू आल्सो फाइन ट्यून कि कौन है। बट आल्सो एक नजरिए से देखा जाएगा तो आईपीएल 2 हफ्तों में आ रहा है। दिस कैन हेल्प पीपल गेट इनटू दैट आईपीएल फ्रेम ऑफ माइंड। आपने अभी 5 डे टेस्ट मैच खेला है, तो काइंडा एक वो शिफ्ट करने का टाइम आ गया है फॉर सम प्लेयर्स हु आर अक्रॉस द फॉर्मेट टू काइंडा गो विद दैट। So that's what I think about this ODI series. Saurav, what आपका क्या ख्याल है इस ODI सीरीज के बारे में, जिसका अब इतनी मोमेंटम या इतनी मार्केटिंग नहीं मिल रही जितना बॉर्डर गवस्कर ट्रॉफी को जो दिया गया था ट्विटर में या मीडिया में एंड ऑल दैट। what are you seeing there? Yeah, I mean, you are pretty much right. I mean, the series is, gonna get sandwiched between IPL and BGT. So BGT अभी खत्म हुई है और ऑलरेडी BGT अगर लोगों ने देखा होगा एटलीस्ट इंडिया में, तो लॉट ऑफ प्रमोशंस, लॉट ऑफ एड्स रनिंग अराउंड द आईपीएल। तो आईपीएल का थोड़ा नशा ऑलरेडी टेस्ट मैचेस में इंजेक्ट कर दिया था। और फिर आईपीएल इज अराउंड द कॉर्नर, तो आई थिंक ओडीआई सीरीज, आई मीन आई एम अ क्रिकेट फैन एंड आई लव एनी फॉर्म ऑफ cricket, and you just give it to me at any point of time, irrespective what's any bigger tournament that might be coming in the future, which IPL is. Um, लेकिन हाँ, it's an important see. I mean, if you just look on the hindsight, I mean, if you just look at the importance of the series, if you want to, look beyond IPL and look beyond WTC, which we spoke about yesterday, it I won't say it is a precursor to the World Cup, but these are two top teams who are who are playing the 50 over format, and you have the ODI World Cup, which is around the corner. I think is around 6-7 months away. So it is a good precursor tournament as far as I would say. But yes, I mean, to answer your question in short, बहुत ही कम तो नहीं बोलूंगा, थोड़ा लोगों में एक्साइटमेंट है, लेकिन हाँ उतना कंपेयर टू एक्साइटमेंट नहीं है जितना टेस्ट मैच जो हुआ था और अब जो बीजीटी। आईपीएल आने वाला है हाँ, उसके लेकिन हिसाब से आई तो कम ही थिंक है। लेकिन हाँ, आई मीन, यू नेवर नो। आई थिंक इंडिया में ओडीआई सीरीज कैन पिक अप सम अमाउंट ऑफ मोमेंटम, एज ओडीआई सीरीज के जो पिचेस रहते, ओडीआई के जो पिचेस होते हैं ज्यादातर इंडिया में, दे आर बैटिंग फ्रेंडली, बॉल सीधी आएगी, small boundaries, heavy, good bats, and you have good strikers of the ball in both the sides, especially Australia. Correct. So you can see a bare minimum 650, 700,
runs being scored on a single day. So I am expecting a run feast, as far as scoring of runs is concerned. So you never know, and I think it might just attract few more viewers is what I'm करेक्ट expecting. करेक्ट आई थिंक ये आपने सही बोला कि शायद इतना एक्साइटमेंट इतना नहीं है जितना बॉर्डर गावस्कर को मिला था टेस्ट ट्रॉफी को और आईपीएल को जो मिलने वाला है. बट मोर देन व्यूअर्स आई थिंक सेलेक्टर्स के लिए इंटरेस्टिंग ट्रॉफी होगा क्योंकि दे कुड गेट अ चांस टू ट्वीक अराउंड कि Yeah. कौन है हमारे जो 15 खिलाड़ी जो 6 महीने के बाद वर्ल्ड कप के लिए खेलेंगे. जी. थोड़े लोग आर नॉट रेडी, लाइक जसप्रीत बुमराह मे नॉट बी रेडी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम. मैक्सवेल जो अभी आ रहे हैं अपनी इंजरी के बाद वापस स्क्वाड में. आई थिंक इट अलाउस सेलेक्टर्स टू गेट वन लुक कि who are my key players in India in the World Cup this year. I think it gives them an opportunity. Australia इसके बाद चला जाएगा Ashes और India IPL खेलने चला जाएगा, and then essentially it gets into that different mode. I think India is going to play West Indies as well later in the summer. They'll go to the West Indies for their 2 test ODIs and all that. तो उसके बाद तो सब लोग IPL मतलब World Cup के preparation में आ ही जाएंगे अगस्त सितंबर में. But I think this is one last opportunity for them to see the conditions कि कैसे, who are these people whom we should eye on. So let's start with the team India. What are we thinking on the lineup? क्या लगता है who will be the key players for the India for the first game? At least we'll start day by day, week game by game चलते हैं. पहले गेम वानखेड़े में हो रहा है. क्या लगता है इंडिया, टीम इंडिया का प्लान और प्लेयर स्ट्रेंथ? Who are the key players here? So I think since Rohit Sharma is not playing tomorrow, I think he's going to be absent because of a family function, if I'm right. Correct. So I think Family you're going commitments to के कारण he's not part of the squad. Yeah. So I think you're going to be seeing a dynamic duo of Ishan Kishan and Shubman Gill to be opening. Shubman Gill to be opening, and then you will have Sky coming into the team. I think so. I think he should be there. I think so. Yeah, he should although be उनका there. ODI का ट्रैक रिकॉर्ड T20 जैसा नहीं है, but I think he has earned his merit to get into the squad to try it out here. Yeah. So so I think more or less आपकी बैटिंग वही रहने वाली है. ईशान किशन, Shubman Gill, Surya Kumar Yadav, who I think would be coming on 4, Virat Kohli at number 3, Shreyas Iyer not being in the team, and most likely, I mean, बातें तो यहाँ पे ये भी चल रही हैं कि शायद वो वर्ल्ड कप के लिए भी फिट ना हो सकता है. That's a big news. हो सकता है. फिर ज्यादा लंबा हो जाएगा फिर उनका. So यहाँ पे कैच ये है श्रेयस अय्यर का कि so if he goes for a surgery, he will not be playing the WTC. Not the WTC, the World Cup 50-over format final. World Cup ODI, which is scheduled in October. But if he goes for a rehabilitation, there are chances that he might play the ODI World Cup. So that's what currently the state of Shreyas. ये सीरीज के लिए तो completely out है, तो we can move from Shreyas है. तो उनके स्पॉट में कौन लगता है? I think Rahul now has a chance. So KL Rahul, blessing in disguise. He'll be smiling like a Shy cat. उनको चांस मिलेगा. I think. उनका वैसे ODI में परफॉर्मेंस देखोगे compared to Test, he plays well. Not bad. He's okay. He can do well and he can accelerate. उनका जो T20 का गेम वो जो उन्होंने किंग्स 11 के साथ करा हुआ है 1-2 साल पहले, he can bring a version of that to ODI. He's done well in ODI. So I think he's not a bad number 5 replacement. Yeah. So I think KL Pandya. I think he's going to be the replace captain. He's going to be the captain for the game. Yep. Jadeja रहेंगे आपके. I think the biggest dilemma that I think Indian management might face is who do they go with? Do they go with Kuldeep Yadav or do they go with Yuzi, as in Chahal? Chahal has lately in the ODI format or the shorter format, he hasn't been bowling that well. He's been going for runs. That's one thing. And Kuldeep has come back really well in all the formats. I mean, I'm also including tests in there. He bowled brilliantly in the test matches. It's a little very harsh of him, not to be playing in any of the matches in the BGT. But it's going to be one dilemma for the Indian management. Who do they go with? Do they go with Chahal? Do they go with Yadav? एक और dilemma है उनके पास है. I think you're missing 2 more players जो इस स्पॉट में खेल सकते हैं. तो आपके टॉप ऑर्डर तो सेट हो गया. आपका ईशान किशन आ गए,
आपका शुभमन गिल आपके ओपनर्स आ गए हैं, कोहली आ विराट गए, कोहली इज यादव आ 3, गए, सूर्य कुमार इज 4, केएल राहुल, राहुल इज 5, हार्दिक पांड्या इज पांड्या। 6 एंड देन जडेजा इज 7। तो आपके आपके टॉप ऑर्डर टॉप 7 तो हो गए। अब आते हैं बॉलिंग में। आपने बोला कुलदीप यादव और चाहल। चहाल। दो और नाम जो सर्कुलेट हो रहे हैं, जो कंटेंशन में हैं, जो है वॉशिंगटन सुंदर और अक्षर पटेल। व्हाट डू यू थिंक अबाउट देयर चांसेस? Since the track is going to be flat, I would prefer a spinner. So you anyway would be playing Jadeja. So you have a finger spinner there. You will be Correct. playing. You'll be going with three fast bowlers. There's no denial there. You'll be going with Shami, Siraj, and Umran. If I'm right. I Uh, have an interesting take on that, but we'll go to the fast bowlers in a minute. Let's talk spinners. Okay, you already have Jadeja, तो आपके एक so फिंगर you स्पिनर have आ चुके Jadeja, हैं। who is a finger spinner. हाँ, and In a he does flat well in in a ODI. हाँ, perfect है इस पिच के लिए। He'll run through his overs. Yeah. He will do his So job. in a flat deck, spinner. Now either it's going to be Chahal or Kuldeep Yadav. That's the Indian management who got to decide. Chahal has a very good record versus Australia, and he has a very good record versus man to man. If I go with Mr. Maxwell, and Maxwell is making his comeback to the team. I mean, from his injury. So that's one dilemma. I mean, it's a toss up. I तो mean, as आपको लग रहा है I would कि say, बिटवीन कुलदीप यादव और चाहल होगा, और वॉशिंगटन Chahal सुंदर होगा. अक्षर No. पटेल ने जो इतना अच्छा परफॉर्मेंस दिया है ऑस्ट्रेलिया के टेस्ट के, हालांकि टेस्ट में दिया है। डू यू थिंक ही हैज अ चांस हियर, आउटसाइड चांस टू गेट इन, कि बैट्समैन नंबर 8 If एक he, वो हाँ, then लेकिन फिर आपके बैटिंग बॉलिंग फिर आप ऑलराउंडर पोजीशन में जैसे। I mean, I'm not saying it's a bad option. I mean, usually in the past, Indian management has gone with उनका ज्यादा प्रेफरेंस रहता है कि टेक देयर बैटिंग डीप में. आई मीन आपने टेस्ट मैचेस में भी देखा होगा. करेक्ट। आई थिंक दैट पॉसिबली वाज वन ऑफ द रीजंस कि कुलदीप यादव शायद एक मैच भी नहीं खेले और अक्षर वाज परफॉर्मिंग वेल. And your batsmen overall, they were low in confidence and the kind of pitches that we basically they were served with. तो ज्यादा रन तो बना नहीं रहे थे. अक्षर was scoring runs and possibly अक्षर was preferred over Kuldeep Yadav. लेकिन if Indian management trusts in their first to six batsmen, see the rule is as they say. I mean, if your first six batsmen are not scoring runs, you don't expect your seventh batsman to score बट runs आजकल as well. इंडिया में Although 7th बैट्समैन ही स्कोर कर रहे हैं। लेकिन वो टेस्ट मैचेस में चलता है. वो हालांकि ज्यादा हाँ, टेस्ट आई मैचेस में. अंडरस्टैंड। हाँ, आई अंडरस्टैंड। और हालांकि अभी the other हार्दिक thing पांड्या आ is चुके हैं, ही इज गिविंग दैट लोअर ऑर्डर स्टेबिलिटी टू द टीम। हाँ, आई the गेट other दैट। thing is Akshar has played well in the shorter format as well. I think he played a match-winning innings against West Indies some time back. So बुरे ऑप्शन नहीं है वैसे। Akshar is not having bad credentials. Like, if I just want to spice up the variety in the bowling attack, you have three seamers, one quick, Siraj, and then Siraj, Umran, and the other one was I forgot. शामी। सिराज, शामी और शामी की जगह पे आई डोंट नो इफ शार्दुल ठाकुर इज शार्दुल आल्सो ठाकुर इन. भी ऑप्शन में है, वही मैं बोलने वाला था कि तो आपका शार्दुल ठाकुर शार्दुल कैन बी. ठाकुर इज आल्सो अराउंड द ऑप्शन देयर, ही कुड बी एन ऑप्शन टू एज वेल। Yeah, and he is a decent batter. He's a ही इज अ decent, डिसेंट more than बैटर, a decent batter. ही इज अ वेरी He's गुड more बैटर। than a decent batter. Yeah, तो मैं कुलदीप को रखूंगा. Honestly speaking, Kuldeep या Chahal को. I mean, if you want to give some confidence to Chahal because he's been leaking runs in the past. So either one of them. So it's a toss up between one of them. एंड व्हाट अबाउट And वॉशिंगटन then सुंदर? no, I mean, if you're choosing Sundar, then there's no reason why you shouldn't be choosing Mr. Akshay. So fair enough. yeah. Okay, so that was your number 8 position. So it was toss up between Chahal, Kuldeep. You think it's probably Kuldeep, one of the two. I am thinking, I think Kuldeep is a good option, but मुझे लग रहा है कि they may choose Akshar. I have a feeling they may choose Kuldeep, or they could just keep using the Chahal. I'm torn between you. Okay, choose करना मुश्किल लग रहा है कि कौन लग रहा है, but हाँ, it will be one of these three. I think that's one of the spots which is up for contention for the management. फास्ट बॉलर्स के आते हैं, तो ये नंबर 9 इज शार्दुल ठाकुर या उमरान मलिक। मुझे लगता है सिराज और Umran Malik शामी has to आर play. इन। No, सिराज और शामी no, आर इन। I think it would be regressive of the Indian management if they don't play Umran Malik. क्यों लगता It's है very ऐसा? simple for me. India got to have a out and out quick bowler playing in the World Cup. That's for sure.
And But Shami Jasprit, I don't think so he would be playing. जसप्रीत तो अभी Shami, टूर्नामेंट में है नहीं Siraj, तो भी हाँ. हाँ शामी, सिराज, शार्दुल, और कौन से bowlers do we have? I mean, Deepak Chahar, if he comes into the picture, अभी वो who is जोड़ा not तो in the, हाँ is not in हाँ the play. तो they are similar sort of bowlers as far as pace is concerned. I think India has been lacking. और जैसा कि आपने देखा होगा T20 वर्ल्ड कप में भी, every team, although T20 is a little different from करेक्ट. यहाँ पे मैं the T20 का 50 यहाँ form. लेना नहीं चाहता क्योंकि यहाँ पे 50 ओवर में आपको बॉलर हैज टू बॉल 10 ओवर्स राइट. तो आई I'll be curious to see अगर उमरान मलिक खेलेंगे. मुझे तो लग रहा है कि शार्दुल, शामी और सिराज एटलीस्ट फर्स्ट मैच के लिए होंगे. आई थिंक उमरान मलिक खेलेंगे, ऐसा नहीं है कि वो नहीं खेलेंगे. मुझे नहीं लगता कि वो वानखेड़े में खेलेंगे. मुझे मेरे हिसाब से आई थिंक I'll शार्दुल, make a शामी एंड I'll make सिराज. a I'll make a very bold statement. Many of uh, this particular player fans may not like it. I think Shami is outdated in shorter format. Yeah, that's my take. हो सकता है एंड इन Yeah, ऑल that's my take. प्रोबेबिलिटी he could get whacked into the game. मुझे लग रहा है, and we'll talk about pitch after we talk Australia. तो हो सकता है. तो आपका कौन है? आपके तीन प्लेयर्स हैं, इमरान और सिराज और उमरान उमरान सिराज, और ऑल्दो मुझे लगता है शामी को खिलाएंगे. मुझे लगता है शामी को खिलाएंगे. शार्दुल मिसेस आउट. एंड शार्दुल मिसेस आउट, और इट इज गोइंग टू बी शार्दुल, शामी, सॉरी, शार्दुल, उमरान एंड सिराज. शार्दुल से आपको एक बैटिंग ऑलराउंडर बैटिंग भी और मिल डीप जाएगा. डीप जो डीप डीप और डीप कवर नो मिल जाएगा. ओके. मिल जाएगा. I think it's a very balanced team. I think I'd be very you know very excited about to see how Mr. ईशान किशन परफॉर्म्स हियर, क्योंकि उनका स्पॉट और राहुल का स्पॉट में ही मुझे लग रहा है फाइट होगा वंस राहुल शर्मा इज बैक. कि मुझे नहीं लगता कि दे बोथ विल एंड अप प्लेइंग अगर शुभमन गिल हैज टेकन द अदर स्पॉट. सो आई थिंक ही विल बी अंडर प्रेशर टू परफॉर्म overall from other team point of view. Baki, the second spinner is always a contention. Rahul Ravindra Jadeja has taken over, and the third bowler for India will always be a contention. So I think यहाँ पे मुझे लग रहा है कि management will look at who's doing well in the 50 over game. And अगर I feel कि जो जिसने भी इस सीरीज में अच्छा परफॉर्म किया, he is in the World Cup. I can straight away say that that person is in the World Cup. I'm talking about these fringe players. I'm not talking the players who are already locked into the squad. I'm talking the players who are fighting for spots. इस मामले में this can be a very crucial game for them because they'll be in the minds of selectors 6 months before the World Cup कि यार he played well in Right, India right, against Australia, right, which I think would be one right, of the top right. favorites. So let's talk Australian cricket team. Todd Murphy, Nathan Lyon और Quinlan चले गए घर, or they're back home, and we got Adam Zampa back again. I believe that Zampa and I think I heard a few fast bowlers like Nathan Ellis, Sean Abbott, and these guys are all now back in the squad, and Ashton Agar from a spinning side of the things. So let's Yeah, start with the top order. Warner, I think, is back. Warner Warner is is back. leading Delhi Capitals in IPL. वो news आ गया है now, so I think Warner will play now the game. Warner and Travis Head opening. You think? क्या लगता है? राइट. एक और चीज मैं बोलना चाहूंगा ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम के बारे में. मुझे लगता है ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम मैन टू मैन, एंड अगेन इंडियन क्रिकेट फैंस में नॉट लाइक इट, मैन टू Are मैन better ऑस्ट्रेलियन than क्रिकेट टीम, Indian team? इट्स it is. I mean, if you keep your emotions aside, I think it is man to man. I mean, हम, I mean, अगर मैं, चलो पहले I मैं think थोड़े डेविड वार्नर से positions स्टार्ट में करता I हूँ. would say Indians are better, but हाँ, I mean I am not against Let's your look at assessment. David Warner. David Warner is not the Warner who plays test matches in India. Correct. उनका ODI रिकॉर्ड इंडिया में is terrific. It's terrific. ठीक है. Then you have Travis Head, and Travis Head has been playing very well even in the ODIs. Correct. I remember certain अभी एक ODI matches that 150 he मारा played है in. अभी एक one of the games में, अभी पिछले सीरीज में उनका जो पीडी ओडीआई सीरीज हुआ था, उन्होंने एक्चुअली ओडीआई का गैप काफी आ गया है ऑस्ट्रेलिया का. आई थिंक वर्ल्ड कप Right. के वो T20 वर्ल्ड कप के बाद एक सीरीज खेला एंड देन दे हैव बीन ऑन different I saw format him. altogether. I saw him playing in Pakistan against the likes of Naseem Shahs and Haris Rauf of the world, and he. I mean, he's not this. I mean, he's comfortable against pace. Lekin Correct. he played very well in the subcontinent conditions. और आपको थोड़ा बहुत glimpse मिल भी गया होगा BGT
में कि Correct. he I think he can he's very adapt well. aggressive. He can stick into the crowd. और And उनको अगर मारना है तो he can accelerate. So he is a very good option there from an ODI standpoint. and then you have Steve Smith. Now लोगों को लगता है कि Steve Smith is not as good as a ODI player that he is in a test matches, which is a fair assessment if you compare. नहीं मैं नहीं मानता sorry. क्योंकि मेरे हिसाब से स्टीव स्मिथ इज लाइक विराट कोहली. He will take along, he will rotate the strike, नहीं मतलब he can hit the boundaries. actually क्या हो जाता है कि you look at the disparity as a difference of average of Steve Smith in the test matches, which is 60, and I think in the one days it is around 43. It is quite a lot when you compare with he's not as Virat. prolific in is tests. Correct, I get it. not as prolific. Or of course, I mean Virat or Babar Azam ke jaisa, he is not scoring those lot of hundreds. But that's one. I'll throw one interesting stat. जैसा मुझे याद है, I think in the current lot of players, India and Australia, उनका average सबसे high है as far as the number of runs he has scored in the India Australia matches, or the average that I was talking about. I think it's his average is the highest. It's not even Virat Kohli's. So in the India Australia match, इंडिया ऑस्ट्रेलिया की मैचेस कंपेयर कर रहे हो, whether the India comparison Australia matches they're playing में head India to head. Australia right Okay, head to head, yeah. it's Steve interesting. I Smith didn't know that. has the best record. I think Or I think he'll be that number 3 player, ideal number 3 for them to at these conditions. कौन लगता है number 4? right. Marnus Labuschagne. I don't know how he is in one days. मैंने उनका टेस्ट का गेम देखा हुआ है. He's amazing I in have test, seen but him. I don't know I have one days I में have कैसे seen खेलता है. him. I have seen him playing in one days. I don't know what the Australian management is going to decide, if it is going to be a toss-up between Mitchell Marsh and Marcus Stoinis. मुझे लगता है Mitchell Marsh को खेलना चाहिए नंबर 4 पे, मैक्सवेल को आना चाहिए नंबर 5 पे, कैमरून ग्रीन को आना अगेन आप शिफ्ट कर सकते हैं, कैमरून ग्रीन नंबर 6, स्टॉइनिस नंबर 7, या फिर स्टॉइनिस नंबर 6, कैमरून ग्रीन नंबर 7. तो इस लाइनअप पे फिर मार्नस लाबुशेन इज मिसेस आउट. और ये एक फील देगा अगर आप कंपेयर करेंगे ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग लाइनअप को विद इंग्लैंड बैटिंग लाइनअप. एवरीवन मे बी बारिंग स्टीव स्मिथ कैन बॉल goes berserk. Goes berserk and also can ball. They have that all-rounder. They also have those all. They can all throw a ball. So but except Mitchell Marsh, मुझे नहीं लगता कि मिचेल मार्श बॉलिंग करते हैं, और उन्होंने आई थिंक वो करेंगे भी नहीं. That may be, अगर उनको एक बॉलिंग ऑप्शन चाहिए होगा, then and that's what I'm unclear कि मार्नस लाबुशेन का वैल्यू ऐड होगा इस ओडीआईज में अगर मिचेल मार्श और मार्कस स्टॉइनिस में, मुझे नहीं पता. नहीं, क्योंकि मुझे अगर आप देख रहे हो स्टीव स्मिथ और मार्नस लाबुशेन, they can actually same players and they can bring the halt to the game, as they say, right? Correct. I mean, scoring rate thoda sa niche. You only need one person in that mold. You don't need 2 players in that mold in ODIs now. Yeah, right. ODIs is that mix of T20 plus. So मुझे लगता है they should go with Mitchell Marsh, like the way they go with Mitchell Marsh and they've backed him in the T20s. They should back Mitchell Marsh in ODIs as well. हालांकि ODI format sometimes, it's a wait and watch sort of a thing. क्योंकि अगर आपके 2 विकेट चले गए 8 ओवर में, and then you want to build a partnership until 30th over before you go berserk. Yeah, you need someone to do that partnership building game in that aspect. So और 15 ओवर 40 ओवर के बीच में anyways what you are looking at, you are looking at expectancies. Okay, 6 runs per over, 6 runs over, and try to keep up the wickets and all that. Yeah. तो लेकिन मेरे हिसाब से अगर आप said, हाँ, मुझे लगता नहीं है कि मार्नस लाबुशेन खेल पाएंगे, क्योंकि अगर नंबर 4 में मिचेल मार्श आए, नंबर 5 पे आपके ग्लेन मैक्सवेल आए, और नंबर 6 पे आपके कौन आ रहा है, कैमरन ग्रीन या मार्कस स्टॉइनिस? I think Cameron Green is going to play. Cameron Green will play. I'm pretty sure of that. And I think it's I think हालांकि मुझे लगता है कि मार्नस लाबुशेन को नहीं खिलाना चाहिए, लेकिन I have seen the Australian team backing him in the ODIs, तो मुझे लगता है कि अगर वो खेलेंगे तो मिचेल मार्श नहीं खेलेंगे. मिचेल मार्श नहीं खेलेंगे. And then number 5 would be Glenn Maxwell. I think Glenn Maxwell will slot back number 5 right away. Number 6 हमें लग रहा है कि Cameron Green, which I think would be probably also well fair कि वही होगा. Right. 7 में आपका कौन आएगा? आगे लगता है Alex Carey नंबर 7. तो आपके बॉलर्स की बात करते हैं, तो आपके स्टार खेलेंगे. पैट कमिंस नहीं है, जॉश हेजलवुड नहीं है, तो मैं सिंह स्टार्क will lead the lineup from fast bowling. Stark and Zampa has to be there. Zampa has a very good record versus King. और Zampa और वर्ल्ड कप के बाद बहुत अच्छा खेल रहे हैं.
Right. in general. Right. I mean, Right. he has improved over Right. the time. तो आपके वो हो हाँ. गए, आपके 8 and 9, तो आपके बाकी दो बॉलर्स कौन होंगे? यहाँ पे मुझे That's थोड़ा gonna. कंफ्यूजन लग रहा है. तो ये ही एक एरिया है जहां पे मुझे लगता है कि ऑस्ट्रेलिया मैन टू मैन डजंट मैच अप वेल विद इंडिया. करेक्ट. लगता है और मुझे. यहाँ पे आई मुझे लग रहा है थिंक कि वो एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हैं, क्योंकि दिस इज द प्ले दे कैन एक्सपेरिमेंट, क्योंकि इवेंचुअली पैट कमिंस आ जाएंगे, तो उनका जो लास्ट स्पॉट है दैट इज अप फॉर ग्रैब्स. Would it be Josh Hazelwood or would it be one of the persons that have been here, like Sean Abbott, Nathan Ellis, or I think Jai नेथन Richardson, right? Jai नहीं है. Richardson नहीं. back. And he hasn't impressed me actually. I've been seeing him for Correct. a long time. I saw, yeah. I mean, I saw him in IPL. I wasn't very wow with him. So I have Actually a feeling Nathan between Ellis. Abbott और Nathan Ellis में एक आएगा, और मुझे लग रहा है कि Nathan Ellis could be the person who could come in and play that 11th bowler. Nathan Ellis is a decent batter. Do you know that? Oh, I didn't know that. मतलब yeah, he is a decent batter. So पता नहीं, देखते हैं क्या होता है. I think Sean Abbott और I think Nathan Ellis के बीच में टॉस अप है, like the way in नहीं India but it is between Kuldeep Yadav and नहीं but इस बार Yuzvendra तो Chahal. दोनों खेल सकते हैं, because there's no Pat Cummins. There's two bowling नहीं spots तो up for grabs. नहीं तो आप एलेक्स कैरी आगे आपके सेवेंथ या एट्थ. सेवेंथ में होंगे. हमने हाँ, सेवेंथ में मार्कस वो होंगे. स्टोइनिस के बारे में बात नहीं करी. What do you think is in? If he's in, then one of Nathan Ellis and Sean Abbott will play. Then Marcus Stoinis will slot in एक्चुअली 6th or 7th. एक्चुअली अगर देखो, एक और चीज है कि अगर मानस लाबुशेन कम्स इन एट नंबर 4, लेट्स से आफ्टर स्मिथ और मानस कैन स्वैप द पोजीशंस एज वेल. फिफ्थ में आपके आ गए मैक्सवेल, सिक्स्थ में आपके Maxwell, आ गए ग्रीन. Cameron Green. तो अगर लाबुशेन खेल रहे हैं देन इट तो हैज टू Stoinis बी अ खेलेंगे. टॉस अप बिट स्टोइनिस और मिशेल मार्श के बीच में आपको चूज करना पड़ेगा. Let's go with Stoinis as an example here. तो number 7 Stoinis हुआ है. Number 8 Alex नंबर Carey. 8 कैरी, Number 9 नंबर Zampa. 10 Number 10 Stark. और number 11 Nathan Ellis. नेथन एलिस या शॉन एबट या शॉन एबट. तो आपके बॉलिंग, आपके ऑलराउंडर्स काफी हो गए. कैमरिन विल बॉल, ग्लेन मैक्सवेल इज अ ग्रेट, इज इंप्रूव्ड स्पिनर. नेथन जैम्पा के लिए सेकंड स्पिनर बन जाएंगे. स्टार्क हो जाएंगे. अब नेथन एलिस बॉल कर पाएंगे. स्टॉइनस विल बॉल. सो यू काइंड ऑफ हैव दैट ऑलराउंडर प्ले इन दैट आफ्टर Labuschagne, राइट. राइट. Stoinis, Maxwell, Cameron Green, I think, Cameron Green. and Travis Head can He, also ball, if I believe, right? So yeah, you're right. You're right. So I mean, Australia आपके has पास 6 बॉलिंग bowlers. एलिमेंट्स हैं, ऑप्शंस, और इंडिया के पास स्पिन ऑप्शंस के काफी थिंग है. I think yeah, we can end it here with Australian team. Looks like that toss up will be between that Michelle Marsh, Marcus Stoinis वाला एक toss up होगा लग रहा है, with Yeah. Magnus Labuschagne और ये Sean Abbott versus Nathan Ellis. मुझे लग रहा है Nathan Ellis खेलेंगे इस गेम में, as you said, night batter. Let's talk a little bit about pitch. Wankhede, small stadium, flat track. I am thinking this is a 350 sort of a wicket. Bare And minimum. I'm surprised Bare minimum. 350 तो कर ही देंगे ये लोग. मतलब this will be a run, blazing runs feast. Not be surprised some कोई 150 160 भी मार दे. I know अभी ये लोग ने डबल सेंचुरी मारा है, Centurions Yeah, from India. yeah, तो yeah. this could continue that story there. Could continue looking at the. I mean, India के players मुझे I mean, हो सकता है कि either शुभमन गिल, ईशान किशन, आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अगर you shouldn't be surprised कि अगर दोनों में से किसी ने एक ने 200 रन मार दिए तो. I'll not be surprised too if that happens, because एक वो लग रहा है ना कि अब they have to shift the gears. They've been playing in this test mindset, and IPL is 2 weeks away, and IPL is important for all of them. This is the time for them to shift gears. It's Yeah. like perfect middle ground for them to switch, go all the way till T20. एक 50 ओवर का गेम आ जाए, and then you have option to come in, look the wicket and then blaze around. So Yeah. क्या लगता है? What's your final? We'll end with this predictions. First game. Australia. So I what do you think think? Toss एक win reason करके what will captain do? मेरा Toss and मेरा bat? रीजन हाँ, मेरा रीजन ऑस्ट्रेलिया चूज करने का ये है कि दे आर टेकिंग अ लिटिल बिट मोर ऑफ अ मोमेंटम एज यू कंपेयर फ्रॉम इंडिया. आई थिंक दे प्लेड द थर्ड टेस्ट मैच वेरी वेल. दे वॉन इट. फोर्थ दे वर एबल टू ड्रॉ इट आउट. सो आई थिंक आई वुड प्रेफर टू बी इन ऑस्ट्रेलियन कैंप रादर देन इंडिया, जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ थर्ड एंड फोर्थ टेस्ट मैच. हालांकि इंडिया सीरीज जीती है, तो मुझे लगता है थोड़ा सा ऑस्ट्रेलियन कैंप वुड बी रिलेटिवली हैप्पी considering everyone was touting that they would lose 4-0. तो हो सकता है कि ऑस्ट्रेलिया
is slightly more positive. Halaki Indian team is complete. I mean, the ODI team is completely different from the Test matches, barring few players who are still playing in the ODI series. So I'll go with Australia. As I said, I think man to man, especially in the batting, I think Australia has those power players, as I say, right? I won't call them power hitters. I mean, those are power players, and you have the likes of Stoinis, Mitchell Marsh, Glenn Maxwell, Cameron Green. I think that's far too many. क्या क्या लगता है टॉस जीत के what do they do when the toss में Batting, bat or bat first. I don't think so. You're gonna have any due here. you तो तो चांस ही वो नहीं तो है अब ड्यू एलिमेंट नहीं है तो मार्च I में तो think yeah it's you want to enjoy some batting. I think tomorrow is gonna be the day. So my prediction is it's very difficult to call this one. I mean you're rightly said. I think India will lose this one not because India is not good, but India is going to have that change of player personally, especially bowling में. yeah. Like अगर युजवेंद्र चहल या कुलदीप यादव आ गए या उमरान मलिक, शार्दुल ठाकुर, that's a little bit of a setup for them change from the test matches. हालांकि ऑस्ट्रेलिया में भी ऐसा चेंजेस आ रहे हैं. I'm as you said momentum. I'm predicting Australia winning the first game. हालांकि series could be very different. I think India will do well, but I just feel Australia will just edge this one out. So even I'm predicting Australia to win the first one. Just Let's see slightly, क्या just होता है. slightly. Just slightly. I mean it's a very close Just game, slightly. and it's just that कौन कहाँ गिरता है वाला है 19-20 का फर्क है दोनों में जो बोलते हैं. वो मोमेंटम जो लग रहा है and I can see that थोड़े लोग उन लोगों को प्रूव भी करना है मैनेजमेंट को कि यार दे आर फिट फॉर द होम कंडीशंस. आई डोंट थिंक इंडिया हैज दैट प्रॉब्लम हियर कि उनको पता है कि यार हम वी आर ऑलमोस्ट देयर येट. I can हालांकि feel that some hunger between some of those players. David Warner has to prove कि he's still around with all this comeback and all. Maxwell has to prove that he's back क्योंकि there are players fighting with the spots. तो मुझे लग रहा है कि that will alone drive them to do well in the first game tomorrow. I have a feeling वानखड़े हाँ Australia to win. हालांकि I mean even though I'm predicting Australia may just have the slight edge. Lekin backing Australia is like going against a very rich history of India performing very very Which very is why well. I'm saying it's first मैं first game की बात कर रहा हूँ. I think overall series India जीत जाएगा. I don't deny that. Yeah. But I think the first game India will take time to get into the gear. वो switch करने में मुझे लग रहा है कि एक game लगेगा इंडिया को. India will switch by second ODI. But I have a feeling Australia will get that momentum and move on. So we'll end it there. Thank you so much everyone who are watching. Give us a like, subscribe करिए, share करिए. We will be bringing more content on ODIs. उसके बाद IPL भी हम bring करेंगे. We'll be bringing that as well. तो देखते रहिएगा. Hyderabad boys here. Signing off. Thank you again. We'll talk again later. Bye bye. Bye everyone. Shabak hai.